today we have reached the day 2 of fasting, right? So, yesterday we talked about intentions, and moving forward in that, I would, before coming towards today's topic, I would like to ask you to fill in the blank in the comment section, or in whatever way you can reach me out, that what would you fill in the blank with. So here it is, that intentions are a product of, I'm going to give you just two options, which is today's topic, heart or mind. All right, so you have to fill the dash with heart or mind, whatever you think. So it is quite usual that we connect intentions with our mind. We connect it as a thought, right? But yesterday, actually, we learned that intentions are related to your hopes and goals, and eventually turning into actions. So, intentions are just working as your driver, as your motivator towards to do something. It's the very first step, right? It is just the beginning of whatever you want to achieve or whatever you want to do. So you have to fill in the blank, that what do you think that intentions are a product of? Is it heart or mind? So today's topic is about that whether intentions are about heart or mind. I won't answer these questions, or I won't fill in the blank, but I'll just put up some facts over here, and how the world takes it, and whatever each of you and maybe myself also connects intentions to, with the difference of what Quran teaches us and tells us about heart and mind. So usually whenever it comes to thinking and anything which we want to start, we are actually asked to prepare our minds, right? तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जब भी कोई हमने काम करना होता है उसकी नीयत बांध लेते हैं, तो अगला काम यही होता है कि जहन बना लो, जहन बनाया जाता है, ठीक, ताकि उस जहन के बनाने के बाद आप कुछ अमली तौर पर कर सकें, ताकि आपने जो नीयत बांधी या नीयत जो आपने की हुई है वो किसी तरह शेप में आए, राइट, किसी तरह सामने आए. सो नीयत, बेसिकली नीयत का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं उसको टेंजिबल करना होता है, ठीक है ना, उसको टेंजिबल ज़रूर करना होता है. और उसका टेंजिबल वर्जन नीयत का अगर कोई दिखाई देने वाला जो एक ज़रिया है वो आपके एक्शंस है, ठीक, वो आपके एक्शंस है. तो आते कहाँ से आए ये नीयत, कहाँ से आएगी? ये दिमागी कोई आपका मैकेनिज्म है या आपकी कोई रूहानियत से जुड़ा हुआ है या आपके दिल से जुड़ा हुआ है? तो I was actually looking at a reel yesterday. I must share that. Basically, that reel inspired me to talk on this topic today. So that's why actually I ask all of you कि आप कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कर दिया करें, या you can mail me the answers, you can reach me out anyway. किसी भी तरीके से अगर आप मुझे रीच आउट करें कि तो कोई ना कोई चीज़ इंसान को इंस्पायर कर देती है, तो इंसान वो टॉपिक सामने ले आता है. So you could be the source of next inspiration. So this reel, actually, I was looking at it, that
इट शोड कि हार्ट इज बेसिकली जो हमारा ऑर्गन है, जो दिल, जिसे हम दिल कहते हैं, या कल्ब जिसे कहते हैं। तो बेसिकली दिल और कल्ब में भी फर्क है। दिल बेसिकली इज फिजिकल, व्हाट वी नो फिजिकल, ठीक है ना, जो एक आपका जिस्म का हिस्सा है, ठीक है ना, जिस्म से ताल्लुक़ रखता है। कल्ब रूहानियत से, आपकी रूह से ताल्लुक़ रखता है। सो whenever Quran talks about heart, it is not about its process, उसके जिस्मानी जो उसकी ताकत अल्लाह ताला ने उसको दी है, ठीक है, जो एक एज एन ऑर्गन अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, हमारे जो दिलों में डाला है कि इट पम्प्स द ब्लड, इट सर्कुलेट्स द ब्लड। तो खाली वो उसका काम नहीं है। कुरान टेल्स अस समथिंग रियली डिफरेंट। अल्लाह ताला कुरान पाक में बड़ी ही डिफरेंट बात करते हैं, दैट बेसिकली इट इज़ नॉट it is not about heart as just a tool to circulate blood flow in your body, but also Quran speaks of the spiritual heart. So this was the concept of that reel. So I really wanted to check that. I really wanted to check that and revisit what I have been reading throughout Quran. Actually, the thing is, when I answered the very first intro question, I told you that unlearning always helps, right? कभी भी इंसान को अगर आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है, तो वो जो जानता है ना उसको ज़ीरो कर दे, ठीक। अगर आप उसको ज़ीरो कर देंगे तो उसी से you will move forward. So when I just I was watching this reel and the ayat, so I just wanted to go, and because this is something which struck me a lot, right? It has been striking, ऐसी बात नहीं कि ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, it has been striking me whenever I have read it, but it is just the way we see it. And secondly, we just did the topic intentions yesterday, right? So नियत का जो टॉपिक है उसको तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर अकल का, क्योंकि उसमें अकल का जिक्र था कि बेसिकली जो अकल है वो भी ताल्लुक़ रखती है किस चीज़ से, दिल से, कल्ब से, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम योर हार्ट, कल्ब, द स्पिरिचुअल हार्ट, द हायर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट, राइट। सो एक तो हमें ये पता है ना कि इट सर्कुलेट्स द होल ब्लड। दूसरा आप ये देखें कि अगर जो उसका जो एक रूहानी, जो आपका रूहानी कल्ब है, तो वो आपकी रूह में एक गर्दिश लाता है, गरमाइश लाता है, चाहत लाता है कुछ करने की, मोटिवेट करता है कि नाउ अब आपने नियत की है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो अहेड एंड डू इट। तो वो कल्ब है जहाँ से आपका जो एक इग्निशन है वो शुरू होता है। सो इट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर हम देखें, या इसको रूहानी जब हम कल्ब को देखें, तो इट इज़ एक्चुअली द टूल टू इग्नाइट दैट लाइट so that you can move towards the right path or the niyat you have made. All right, so this is what I actually thought about yesterday and thought कि आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज़रूर बात करेंगे। So I have brought two very important ayat. I'm just going to say out the translation over here. जो दो आयात हैं, I am just going to read them out. One is ayat number 74 from Surah Al-Baqarah, which is, "It is the heart that goes blind and refuses to recognize the truth." यानी कि ये दिल है या ये कल्ब है जो कि
देख नहीं सकता और सच्चाई को झुटलाता है। तो ये बेसिकली जब हम इस चीज़ को देखते हैं, इस आयत को ही देख लेते हैं। एक अगर आई वॉज रीडिंग दिस आयत फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जस्ट लेट्स सपोज कि आप भी ये पहली दफ़ा आयत पढ़ रहे थे, तो व्हाट वुड यू गेट फ्रॉम इट? एकदम से इंसान सोच में पड़ जाता है कि हमें क्या बताया गया। इट इज़ द माइंड सेट, राइट? इट इज़ द माइंड सेट। माइंड सेट होता है लोगों का towards a lifestyle, towards doing something. But Quran is telling us something totally opposite. It is telling us something जो वाकई अकल से मावरा बात लगती है. Like we can't think a heart having a mind, right? It is just like that our heart has a mind, actually, in actual, sense. So then when you move forward in the Quran, there was another ayat, which is ayat number 46 of Surah 22. It is heart that inspires the functions to reason and understand. To reason and understand. यानी कि दिलों से सोचना और दिलों से समझना. ठीक है? तो ज़रा आप इन आयात पे गौर करें. The reason to bring these two ayat today is that now whatever intention you have made yesterday, आपने कल से जो एक नियत बांधी है, let's suppose again that basically जो पूरा कॉन्सेप्ट है रमज़ान का, ये आपके लिए एक छोटा सा बूट कैंप है, right? It just works like either a boot camp or a workshop जो आपको सिखाती है that how to spend your life over the year now. कि आपने यही चीज़ और यही फुट स्टेप्स फॉलो करते 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 अगले रमज़ान तक आपने ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, जिसमें ताल्लुक़ की बात हमने की थी, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल हार्ट की बात की है. तो उसका स्पिरिचुअल हार्ट होने का मतलब है दैट इट इज़ एक्चुअली यू एंड अल्लाह. So the intentions, I yesterday told you that if your intentions are not attached to Allah by any ways, you won't actually be as much successful, right? So ये जो नियत है, अगर हम, जैसे मैंने बात की कि नियत इज समथिंग इंटेंजिबल जो हम देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोल सेटिंग. But its driver, the real driver of it is the heart. It is basically intentions are a product of heart. आपकी नियत क्यों आप करते हैं? बिकॉज आपका दिल, एक उर्दू में हमारा एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस होता है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है. वी नेवर से क्योंकि मेरा दिमाग चाह रहा है. ठीक है ना? इट इज़ क्वाइट सेंसिबल नाउ कि हम क्यों कहते हैं कि दिल चाह रहा है. बट आगे से हमें क्या रिप्लाई मिलता है? दिल तो बताता ही है. लाइक एक्चुअली इट्स नॉट दैट फिजिकल हार्ट, even when we say that. It is actually, we are talking about the spiritual heart, qalb. तो कल्ब बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली if after knowing all this, if I were to put the fill in the blank, I would be like that intentions are a product of a heart. All right? So Quran basically talks about mindset. It talks about the heart, the intentions, and basically to stick to the truth. And sticking to the truth actually doesn't require a mindset. सच्चाई के लिए आपको क्यों आपने अपना जहन बनाना है? सच्चाई तो सच्चाई है, नजर आती है. Like you don't have to make your mind for that.
जहन तो उसके लिए बना उस चीज़ के लिए बनाया जाता है जिसमें आपका दिल ना हो, जिसके लिए आपकी नीयत ना हो, तो आप अपने आप को समझा बुझा लेते हैं, राइट। तो बेसिकली जो नीयत है, या कोई भी काम अब आपने करना है, तो यू हैव टू डू इट विद योर हार्ट। सो अल्लाह ताला इज बेसिकली टेलिंग अस कि अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक दिया है, जो अल्लाह ताला ने हमें इबादत का एक जो तोहफा दिया है, और जो इखलाकियात हैं, दे आर ऑल डन बाय हार्ट इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि दे ऑल आर बेस्ड ऑन इंटेंशंस। हर काम के पीछे आपकी इंटेंशन होती है, नीयत होती है हर काम के पीछे। लेकिन वो नीयत तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप आपके अंदर वो जोश और जज्बा ना आए, और वो कल्ब से ही आते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड this is what should we do. And if we talk about reconnection with Allah, so we have to do it with our whole heart. ये काम भी हमने अगर नियत बांधी ही है, तो इसके लिए अपने कल्ब में मोटिवेशन ढूंढें कि आप ये काम दिल से करें, सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पे इबादत ना करें। लाइक इफ़ यू वांट कि उसके रिजल्ट्स और फ्रूट्स, यू वांट टू सी द results and fruits of your ibadat, then you have to do it with your heart. If you want to see the results and fruits of your akhlaq, then you have to do it with your heart. चाहे हुकूकुल्लाह है या चाहे हुकूकुल इबाद है, everything has to be done with your heart. So that is it for today. Inshallah, we will meet tomorrow with another topic. Allah Hafiz. Fi Amanillah.